So sorry. Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well. Through the course of this lecture, हम लोग एक काफी interesting point of discussion को start करने वाले हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर we'll see there are a lot of development, a conceptual clarity building, question paper practicing, जो कि हम लोग करने वाले हैं to ensure that we are getting completely prepared for our upcoming exams like the GATE exam, like your set exams. आपके काफी सारे set exams अब lined up है one after the other, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम हो, हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र सेट एग्जाम हो, तो अभी काफी सारे सेट एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगले एंड कंसिडरिंग वे स्टार्टिंग ऑन विद फेब्रुअरी, अब क्योंकि आपका फेब्रुअरी स्टार्ट हो गया है, राइट, मैं आपको कल की क्लास के अंदर मास्टर क्लास का आपके जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है फेब मंथ के लिए, उसका स्केड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अभी आपका मेन फोकस, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, ये जो सारे के सारे आपके सेट एग्जाम्स हैं, ऑफ कोर्स एट द एंड गोल इज टू लुक एट नेट एग्जाम एज वेल। हम लोग इन सारी चीजों की, इन सारे एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। आज बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से आई विल बी स्टार्टिंग एंड कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे वेर इन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट योर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम का ओवरऑल पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट होता है। हम गेट वर्कशीट्स भी अच्छी तरह से ऑन रेगुलर बेसिस करेंगे। गुड इवनिंग सिमर, श्वेता, पद्मा, प्राजिता, याशिका, देवशीष, विष्णु। तो आज बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से वी विल बी एक्चुअली स्टडिंग के गेट और अन्य ऐसे एग्जाम्स में आपका क्या इंपॉर्टेंस है। उल्टा नेक्स्ट वीक फाउंडेशन बैच का नया यूनिट जो स्टार्ट होगा ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, अभी हम अमेरिकन लिटरेचर को खत्म कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट आपका काफी लंबी क्लास चली थी ऑन अमेरिकन पोएट्री, where we had looked at fugitives, we had looked at objectivist poetry, New York School of Poetry, Black Mountain School of Poetry, आपके how so many classifications of American poetry, like American eco poetry is coming. तो सारे के सारे classes, Chicago poets are there, right? Your Brahmin poets are there, Boston Brahmin poets are there. तो वही American poetry के इतने सारे groups को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो similarly आपको ये याद रखना है that when we are talking about, of course, next week भी आपका post colonial literature फाउंडेशन बैच में स्टार्ट होगा और गेट और अन्य इस तरह के एग्जाम्स में भी यही चीजें आपकी अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कर्सरी ओवरव्यू दूंगी कि क्या क्या चीजों को आपने फोकस करना है। जैसे आपका सिंगल पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन ड्रामा, ठीक है। ये लिस्ट भी मैं आपको देने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इंडियन एस्थेटिक्स हो गए, गुड इवनिंग फ्यूचर ड्रीम्स, गुड इवनिंग फातिमा, गुड टू सी यू अर्ली फातिमा। इंडियन ड्रामा, इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन पोएट्री, राइट, जो पोएट्री इंडियन राइटर्स लिख रहे हैं, या आपके लैटिन अमेरिकन वर्क्स, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर से भी आपके क्वेश्चंस आने लग गए हैं, या आपके नॉट रिकॉग्नाइजेबल या थोड़े से डिफरेंट अफ्रीकन राइटर्स जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंस रहती है। तो आज बहुत ही ब्रीफली मैं आपको, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे कल इसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश का भी एक सेट एग्जाम के पेपर को हम लोग देखेंगे। But today our primary focus is going to be on what? Our primary focus is going to be on ensuring कि हम लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से स्ट्रेस आपका इंडियन राइटर्स, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऊपर है, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक कर्सरी इंट्रोडक्शन दूंगी एंड दैट टू वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नॉवल। अब इंडियन नॉवल जो आपका है, ये यू विल बी अमेज्ड टू सी कि ये इतना वेरीगेटेड है। इंडियन विमेन राइटर्स नॉवेल्स लिख रही हैं, आपका राइटर्स लाइक फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने कल की क्वेश्चन की क्लास में, रिमेंबर यूट्यूब की क्लास में करा था, बाखा का जो कैरेक्टर है मुल्क राज आनंद के अनटचेबल्स में, तो आपके विमेन राइटर्स, मेन राइटर्स, पोस्ट सलमान रश्दी राइटर्स, प्री सलमान रश्दी राइटर्स। तो इंडियन नॉवल का जो डेवलपमेंट है, आप क्या देखते हो कि फ्रॉम राजमोहन वाइफ जो इंडियन इंग्लिश नॉवल का डेवलपमेंट हो रहा है ऑल द वे ओवरऑल, ये काफी बड़ा डेवलपमेंट रहता है, ठीक है। तो ये काफी सारी आपके एस्पेक्ट्स को कवर करता है, राइट, जो कि हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। सो आई विल बी वेरी ब्यूटिफुली प्लांटिंग दिस इंटायर नोशन कि कैसे आपने गेट की जो प्रेपरेशन करनी है, सेट एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करनी है, नेट एग्जामिनेशन की भी प्रेपरेशन करनी
करनी है, तो एक क्या हो गया है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है. दे रियली वांट एवरीबडी टू फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट कैसे हम लोग कॉलोनियल इंटरवेंशन को अंडू कर रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ दीज राइटर्स रियली वांट यू टू रियली गेट ऑन द फोर. तो ये चीज थोड़ा सा प्लीज ध्यान में रखिएगा. ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑल टुगेदर. इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ऑल टुगेदर. यस, वेरी गुड. तो नॉवल के फॉर्मेट से, राइट, नॉवल के फॉर्मेट से नॉवल के बारे में कितने लोगों ने कितना कुछ कहा है. फॉर इंस्टेंस व्हेन वी लुक एट, हम लोगों को मिलते हैं कितने सारे नोशंस ऑन नॉवल, from what talking about and what talking about or other writers also. Eric Orbach is a critic telling you about novel writing altogether. But in Indian English novel का जो development है, नए राइटर्स जो आपके आ रहे हैं, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नॉवल ऑल टुगेदर. ठीक है, अब इंडियन नॉवल का स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है. ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद. ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट बुक. ये ना इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इश्यूज रहेंगे, बट एनीवे. सो ट्रैवल ऑफ आपका इंडियन नॉवल कैसे स्टार्ट होता है, आपका इंडियन नॉवल आपका कैसे स्टार्ट हो रहा है. इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद. Travels of Dean Muhammad was actually one of the first ever published work that we were able to see in Indian in English. 38 letters के format में था. Epistolary format you were able to see. Epistolary format you were able to look at, right? That this particular work was written. Now, I have a question for all of you. What was the name of the first and the only English novel that Bankim Chandra Chatterjee had written? ये कौन सी novel है? Which novel are we talking about? So Bankim Chandra Chatterjee is writing a particular work. इसको क्या बोला जाता है? ये कब आ रही है? 1964 में आ रही है. What is the name of this work? What is the name of this work? What is the name of this work? जल्दी से बताइए. What is the name of this work? Excellent, कुमारी राजश्री, absolutely right. Rajmohan's wife. ठीक है, Bankim Chandra Chatterjee is basically starting the entire tradition of your novel writing. और हम क्या देखते हैं कि आपका राजमोहन्स वाइफ इज कमिंग. राजमोहन्स वाइफ आपका आ रहा है. एंड व्हाट आर वी एबल टू सी. आई कम दिस साइड सो दैट यू बी एबल टू सी इट अ लिटिल बेटर. राइट, सो राजमोहन्स वाइफ आपका क्या कर रहा है. व्हाट इज राजमोहन्स वाइफ एक्चुअली डूइंग. दिस पर्टिकुलर वर्क बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आप देख पाते हो. ठीक है, एंड देयरफॉर बंकिम चंद्र चैटर्जी वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नॉवल. ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नॉवल इन इंडिया. तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है. इन्होंने और भी लिखी थी, दुर्गेश नंदिनी, लेकिन इंग्लिश में नहीं है. ठीक है, इंग्लिश के अंदर लेटर इनको इंग्लिश में पब्लिश किया था, लेकिन इंग्लिश के अंदर राजमोहन वाइफ आ रहा है. काफी क्रिटिकल इवेल्युएशन भी आता है. काफी सारे लोगों के सिलेबसेस में भी राजमोहन वाइफ है. आज उल्टा आप अपना होमवर्क भी एक तरह से कीजिएगा. इफ यू कैन एक्चुअली जॉट डाउन द समरी ऑफ राजमोहन वाइफ, राइट. आपको जितना भी समझ में आ रहा है, व्हाट आर यू एबल टू मेक, विकिपीडिया से देखना है, वहां से भी देख के राजमोहन वाइफ का आप देखिएगा. Then, even Tagore, right? Rabindranath Tagore, he started imitating Bankim Chandra Chatterjee, and then of course he found his own voice altogether. Inki poem Gitanjali is very important, okay? Acha, inki novels, when we are looking at नौकादा बूदी और फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट गोरा. गोरा आपका आता है गरे बारे, होम इन द वर्ल्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी आती है. सो यू आर एबल टू सी दैट बंकिम चंद्र चैटर्जी वाज एक्चुअली गिविंग इम्पेटस. ही वाज गिविंग अ सर्टेन पुश, अ सर्टेन मूव. ऑफ कोर्स ट्रैवल्स विद डीन मोहम्मद आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है. फिर उसके बाद राजमोहन वाइफ आ रहा है. फिर उसके बाद व्हाट आर वी एबल टू सी इन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश नॉवल इन इंडिया. आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज राइटिंग Gare Bare, right? He's writing Gare Bare. That is what you are able to see. He's writing Gare Bare, Home in the World, right? Oh, Home in the World का setting क्या है? Revolutionary movement of Bengal. It is telling you the story from multiple perspectives. 3 perspectives से आपको story पता चलती है. Bimala की story है. How Bimala is having this husband Nikhilesh, right? So when we are talking about Nikhilesh is a really nice person. He takes care of Bimala, but still Bimala gets attracted by Sandeep, right? She's getting attracted by Sandeep. So again, pura ka pura notion that for her there is a different notion of masculinity that she has, for which Sandeep fits the bill and not Nikhilesh, who's allowing her to do all the sorts of things that you can. Okay. By the way, इनकी खुद की sister-in-law के लिए भी कहा जाता है she was a widow, and Tagore was talking about it.
Did Toru Dutt also experiment with a novel form? Toru Dutt ने experiment किया था novel form के साथ. Do you think Toru Dutt, the writer who's considered to be the Indian Keats altogether, she's writing works like Lakshman, Sita, right? A lot of other works. Is she also experimenting with novel? Good evening, Balkishan. Okay, and which is the novel that Toru Dutt is writing? Which is the novel that Toru Dutt is writing? Toru Dutt कौन सी novel लिख रही हैं? Toru Dutt कौन सी novel लिख रही हैं? Which is the novel that Toru Dutt has written? No, Sita is not the work that she's written. What is the novel that Toru Dutt has written? Toru Dutt. So, Travels of Teen Muhammad. Then you have Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chatterjee. Then you have Rabindranath Tagore writing, of course, Gora, as well as works like Gare Bare as novels, right? Which work? No, no, no. Casalina is also not the right answer. ये प्लीज याद रखिएगा, बियांका, ये आपको पता होना चाहिए. बियांका द यंग स्पेनिश मेडन, बियांका द यंग स्पेनिश मेडन, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स सी आपको मैं एक होमवर्क दूंगी. प्लीज अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को अच्छी तरह से पढ़िए. इस पूरे वीकेंड में आप पूरा टाइम लगाइएगा. अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को प्लीज कवर हिम. ऑलराइट, प्लीज कवर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा. ऑलराइट, प्लीज कवर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा. इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स अच्छी तरह से इसको एंड टू एंड, कवर टू कवर, बुक टू बुक अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए. ऑलराइट, प्लीज इंश्योर कीजिएगा. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बियांका द यंग स्पेनिश मेडन, द यंग स्पेनिश मेडन, ये इनकी नॉवल है. ये तोरू दत्त की नॉवल है. Alright, she was of course writing poems altogether, and she tried her hand in novel writing with Bianca after Rajmohan Wife was written by Bankim Chandra Chatterjee. ठीक है, so Toru Dutt is also contributing to the development of novel in India. तो ये basic pointers आपको clear होने चाहिए. ठीक है, ये basic pointers आपको clear होने चाहिए. वही आज मैं classroom students को बता रही थी, आप notes कैसे लिख रहे हैं. एक पेज पे एटलीस्ट एक छोटा सा लिखिए, एक ही पेज पे. मे बी यू आर राइटिंग यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, देन हाउ राजमोहन वाइफ कम्स इन, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, बियांका बाय तोरू दत्त. तो छोटा छोटा करके प्लीज नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से उनको रजिस्टर कीजिए, ताकि बार बार आपको ये पढ़ना ना पड़े. ठीक है, और जिस जिसको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, प्लीज मंडे तक आप लोगों ने अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा पढ़ी होनी चाहिए. यू शुड हैव रेड अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा. Who are the important post independence day novelist? Post independence day novelist कौन कौन है? Who are the most important post independence day जो novelists आ रहे हैं, आपके कौन कौन आ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें आप मुझे ना, इसमें I don't want you to tell me about R.K. Narayan और राजा राव और for that matter मुल्कराज आनंद, because ये 1930s में they are called as the holy triumvirate और ये 1930s में active हो गए हैं. But I have asked you about post independence. So post independence में कौन कौन आ रहे हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन से आ रहे हैं? यस यस शबनम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड द फंडास फर्स्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स. उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें तो हम लोग यहाँ पर भी करेंगे. तो फंडास के लिए आप प्लीज अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को रीड कीजिए. नो नो नो, आई एम सेइंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, और बिंदु वगैरह नहीं. प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओहो, okay. See, immediately after independence, you are able to see writers like Manohar Malgonkar, Bhavani Bhattacharya. These are the writers who are coming in. आपको chronologically पढ़ना है. ठीक है, 60s and 70s में women writings novels लिख रही हैं, वो हम separately cover करेंगे. We will be covering that unit separately altogether. ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है. कौन आपका आ रहा है? भवानी भट्टाचार्य आ रहे हैं, मनोहर मालगोंकर आ रहे हैं. मनोहर मालगोंकर डिस्टिंक्ट ड्रम लिख रहे हैं, which is becoming very very important that you are able to see. ठीक है, साथ ही साथ में खुशवंत सिंह is also coming, he is writing. GV Desani is writing all together. All right, even Arun Joshi, he is representing your overall understanding ऑफ कैसे एग्जिस्टेंशलिज्म इंडिया के अंदर आता है. चमन नहल हो गए. तो ये सारे राइटर्स अभी इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं? राइटर्स लाइक जीवी दिसानी, मनोहर मालगोंकर, सो ऑल ऑफ दीज, भवानी भट्टाचार्य. सो भवानी भट्टाचार्य इज राइटिंग so many hungers written in the context of the Quit India movement, hunger for power, political power, lust, कितने सारे hungers दिखाए जाते हैं. Music for Mohini, he who rides a tiger cannot dismount.
सो दैट इज व्हाट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट हु आर द राइटर्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोमेटिकली you will see के you will start knowing. And Indian English writings, honestly, it's really a delight to study, क्योंकि वो stories से you will be able to connect, right? वो stories से you will be able to connect all together. So that is something which is very important that you should be keeping in mind always. क्योंकि ये वाले questions जो होते हैं, it's always a good idea that you know you're covering it end to end. आप अच्छी तरह से इसको प्रॉपरली बता रहे हैं एंड यू आर कवरिंग इट. ठीक है, सो प्लीज इंश्योर कीजिएगा that you people actually cover it properly. इसको अच्छी तरह से आप देखें. मनोहर मालगोंकर, distant drum से क्वेश्चन आते हैं, combat of the shadows, bend in the ganges, ये सारे के सारे important works हैं, right? Even Disani, J.V. Disani is also very important writer. Khushwant Singh, born in Hadali, now in Pakistan. He was educated in Lahore and London. Trained to Pakistan. History of Sikhs. Right, train to Pakistan, the village of Manu Majra that you are able to see, border of Pakistan, microcosm of communal violence. वैसे भी आपकी important partition novels, right? आपकी जो important partition novels हैं, they are of course critical from your examination perspective. जो आपकी important partition writings आ जाती हैं, partition novels आ जाती हैं, that is what we are able to see. Very good, Devashish, very nice. So please remember, please keep this in mind that whenever we are looking at all of these writers who are coming in, किस तरह से they are representing, how are they talking about Indian writers and translations भी आजकल आपके पूछे जाते हैं, right? आपको जो Indian writers आ रहे हैं in translations, minority writers, subaltern literature, ये सब important है, right? All of this is very important for you to keep in mind. All right, GV Dasani, he's actually, a very important writer who is again writing these absurd works altogether, all about H Hatter, Hindustan Hatter, right? So Disani, Bhavani Bhattacharya, Manohar Malgonkar, all of these, Khushwant Singh, ये सारे के सारे, Arun Joshi is considered to be a writer representing Indian existentialism. जो आपकी Indian existentialism है, वो कौन represent कर रहा है? Who is representing Indian existentialism? Indian existentialism अरुण जोशी represent कर रहा है, right? सो ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट शब्द, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट. सो द फॉरेनर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास, राइट? द फॉरेनर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास. Again, Billy Biswas having a proper lifestyle altogether, but renounces everything and goes away. Right, that is what you are able to see. Kamu, कैसे आपका, we have talked about, हम लोगों ने YouTube पे ही हाल ही में when we did absurd drama, we have looked at the origins of absurd. Please उसको एक और बार go through कीजिएगा. और मैंने आपको सारा upstone भी दी हुई है. I have given you सारा upstone on the Telegram platform. उसमें से भी existentialism को पढ़िए. Right, existentialism, that is something which is being discussed over here. Chaman Nahal, again, Azadi ke liye jaane chahte hain, which is a partition novel. It won the Sahitya Academy Award as well. So you're able to see that how Train to Pakistan by Khushwant Singh as well as Azadi by Chaman Nahal, they are both becoming a part of your partition writings. आपका जो partition literature है, आपके जो partition writings हैं, उनसे ये inspired है. They are getting inspired by your partition writings. They are getting inspired by your partition literature. That is what you are able to see. Right, and please keep that in mind. According to Richard Cronin in his article India, he says modern Indian literature was actually born with the coming of Salman Rushdie. So all of these writers, जब आप एक timeline draw करते हैं, a lot of people say that the turning point is also Rushdie's Midnight's Children. A lot of people consider Indian literature to be pre-Rushdie and post-Rushdie in English. So Rushdie also plays a very important role. Right, so what are we able to see? Rashmi is growing up in Bombay, right? And what happened is, in case of first novel, I think Grimace, that was a complete failure, and that is when his wife told him that why don't you talk about a subject that is closest to your heart, and that was Bombay, and that is when Midnight's Children is coming, which got Best of Booker Prize that year. ये सारे के सारे प्राइसेस आप देख पा रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट? नो वरी सोनाली, आई होप I put it on the group. I'll just share it on the other group also, so that you'll be able to get it. Right? Okay. Right.
So I hope this is absolutely clear to everybody. I hope everybody is able to understand that what is the importance that Richard Cronin is saying कि सारा कुछ Rushdie से ही start हो रहा है. Richard Cronin is saying everything is starting from Rushdie itself. That is what you're able to see. And the way that he is using magical realism, which is what it is anti-tradition. Magical realism क्या है? What is magical realism? आज foundation batch के class में, when we were looking at fugitives, the group of poet critics, remember poet critics जो आपके fugitives आ रहे हैं, what are they doing? They are going against traditional style of writing, anti-traditionalism. Beat generation poetry क्या कर रही है? It is anti-tradition altogether. Right? That is what we had looked at. That is what we were able to see altogether. इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर बाय राइटिंग ग्रिमस व्हिच वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल एट ऑल देन ऑफ कोर्स हिज नॉवेल शेम ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इट इज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान ही डिडंट फॉरगिव हिज फैमिली बिकॉज हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बॉम्बे टू Pakistan and that is the reason we are able to see that both London, India as well as Pakistan, these are the three important categories जो Salman Rushdie is actually known for. Okay, satanic verses again because of which he was issued the fatwa, and iske memoirs when he went underground, he had written what he had written about the memoirs of Joseph Anton. And Joseph Anton करके इन्होंने क्यों लिखा था? Because he was inspired by Joseph Conrad and Anton Chekhov. Right, so जब ये satanic verses के बाद he was issued a fatwa because of which he had to go out. What were we able to see? We were able to see that he was writing the memoirs of Joseph Anton. He was writing the memoirs of Joseph Anton, which was the pen name that he took. He was not writing under his own name. No worries, Rani. Did you also not get the notification? एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा. So how you were able to see that the fatwa was issued to him, which actually resulted in him hiding altogether. Works like Moore's Last Sigh, ये आपका आता है Christian Jewish Family, right? Ground Beneath Her Feet, Shalimar the Clown, ये सारे works important हैं. रश्दी के सारे works, right? रश्दी के सारे works. आप अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा में भी वो जो चैप्टर है ऑन सलमान रश्दी उसको प्लीज एक बार अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा. जैसे आज वी वर टॉकिंग अबाउट, रिमेंबर विटमैन इज राइटिंग डेमोक्रेटिक विस्टास व्हिच इज हिज एसे वर्क. सिमिलरली रश्दी इज राइटिंग वर्क्स लाइक इमेजिनरी होमलैंड्स. ये क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने आज क्लासरूम क्लास में करा था. इफ यू रिमेंबर वी हैड टॉक्ड अबाउट वॉल्ट विटमैन क्या लिख रहे हैं. ही इज राइटिंग डेमोक्रेटिक विस्टास, राइट? डेमोक्रेटिक विस्टास इज द वर्क ऑफ essays that he is writing, just like Emerson is writing Brahma and the Hymn to Concord, right? So similarly, what are you able to see? Rushdie was writing an imaginary homelands where he proclaims that Commonwealth literature does not exist. Where he proclaims, वो क्या proclaim करते हैं कि Commonwealth literature जो है that does not exist at all. Midnight's Children भी आपका आ रहा है, very important work. How it is talking about people born at the stroke of midnight. Here I'd like to share a personal anecdote also. My dad was also born on 19th June. So Salman Rushdie, as well as unfortunately or fortunately, whichever way you want, even Rahul Gandhi was born on that day. So 19th June, 1947 is when Salman Rushdie was, born at the stroke of midnight. यहाँ पर क्या होता है Midnight's Children में? All the people who are born at the stroke of midnight, when the world sleeps, India wakes, right? Jawaharlal Nehru's speech, the famous speech that you're able to see. From that particular moment, all the people who are born on midnight, all the way till Indian emergency, उनकी story दिखाई जाती है. Development of India दिखाया जाता है across the years. Emergency period को दिखाया जाता है. And how these people who are born, these children born at the stroke of midnight, how these children are having telepathic powers. So that is also an element of magical realism that you are able to see altogether. Okay, so please keep that in mind, right? Yes, of course, Shweta Padma. So what are we able to see? We are able to see in the story of Salim Sinai, you are able to see the entire history running, right? Pura ka pura political commentary he's trying to tell you. And like I said, his first published work was actually Grimace, right? Grimace to Thanet was written for a science fiction competition. Even Handmaid's Tale by Margaret Atwood had a very similar story that you were able to see. ठीक है. और ये बुक ना it was criticized. इसका हीरो कौन है? Flapping Eagle. Flapping Eagle is the hero that you are able to see. Flapping Eagle is the hero that you are able to see.
Okay, so please remember that. So Salman Rushdie's Grimace, Grimace the expatriate, right? The expatriate European magician. He's the immigrant altogether. So this is something that we'll be looking at कि कैसे आपका diasporic writings, किस तरह से even when we talk about the immigrant crisis, ये post colonial literature में एक बहुत common theme है. मीना अलेक्जेंडर भी इसके बारे में बोलती है in the poetics of dislocation. You are able to see Meena Alexander also talking about this altogether. The question of rootlessness, right? The question of rootlessness. So ये आपको याद रखना है सलीम सिनाई का पूरा स्टोरी, पीपल बॉर्न एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट विद टेलीपैथिक पावर्स. आपको याद है पैट्रिक वाइट का वॉस के अंदर भी आपका टेलीपैथिक पावर्स हैं. सो द ऑस्ट्रेलियन राइटर पैट्रिक वाइट, उसके वॉस के अंदर भी there are these telepathic powers that you are able to see, right? So Salim's life is completely handcuffed to the life of, you know, the nation. So your life will be in a sense a mirror of our own. That is what, you know, is already told about. So again, colonial times, post independence time, ये सारा कुछ दिखाया जाता है. How you're able to see Salim is basically the product of this entire liaison between a departing Sahib, William Methwold, and Vanita, right? The Christian Street singer that you are able to see. इसमें you should also compare it with Bapsi Sidhwa. Bapsi Sidhwa is also telling you in Ice Candy Man about partition overall. ठीक है? Salim gets switched with Amina and Ahmad Sinai's real son, right? So that is another thing altogether. Cosmopolitan Bombay. Bombay was always very close to Rushdie, right? And that is what you were able to see. तो पूरा का पूरा ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टाई, द एंशिएंट कश्मीरी बोटमैन, पूरा एडम अजीज, ये सारे के सारे नेहरूवियन पोर्ट्रेट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको सारे डेवलपमेंट पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज एट द एपिसेंटर. इट टेल्स यू अबाउट द इंडियन मूवमेंट ऑल टुगेदर, राइट? दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. और काफी सारे लोगों के सिलेबसेस में you are able to see that Salman Rushdie का Midnight Children is a part of multiple syllabuses also. काफी सारे बच्चों के सिलेबस के अंदर भी ये आपका वर्क पूछा जाता है. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. एंड रश्दी ब्यूटीफुली सेड, इट इज लिटरेचर फॉर मी, open the mysterious and decisive doors of imagination and understanding, to seek the way others seek, to think the way others think, and above all to feel. Right? When you're writing things down, you're able to put things together in perspective, right? The best way to actually, the best ideas are first coming when you're thinking and then of course producing it all together. अच्छा, प्लीज याद रखिएगा, when we are talking about writers like Boman Desai, ठीक है, Boman Desai. So see, whenever you are able to look at, you are able to see किस तरह से works आ रहे हैं, किस तरह से when we are talking about memory of elephants, ठीक है. So ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी whenever all of these things come. So whenever there are these questions that are coming, और memory of elephants के ऊपर, right, memory of elephants के ऊपर आपका question आ चुका है, right? Memory of elephants is a work by Boman Desai. How many of you heard about Boman Desai? But Boman Desai आपका आया हुआ है. It's actually trying to tell you about family history. It is trying to tell you about the Parsi community through these characters who are there all together. Even Rohinton Mistry tries to get that alive, the Indian Canadian writer nominated for the Booker multiple times, that you're able to see. So the Memory of Elephants is a very important work that you're able to see जो Boman Desai लिख रहे हैं. Okay, so please remember, Homi Saravi is the protagonist. Homi is a Parsi scientist from Bombay. She invents a machine that can scan his brain for memories of good times. Okay, and the machine goes wrong and he experiences ancestral and racial memories, and he encounters ancestors and relatives both dead and living, even though the machine was built. अच्छा, by the way, याद रखिएगा, इंडिया के अंदर when we talk about, we all know about Tatas, we know the legacy the Tatas have created altogether. Most of the times what you were able to see, that the Parsi community was always at the forefront of, the first pilot in India, the first cardiologist, the first radiologist, etc., etc. जो सारे first थे ना, वो Parsi community से आ रहे थे, right? ये सारे के सारे जो first थे आपकी Parsi community से आ रहे थे. That is what you will have to remember. So Boman Desai, the memory of elephants, elephants memory क्या होती है? Elephants memory is basically
When we are talking about elephant's memory, what is elephant's memory? Elephant's memory is that you have got a very large memory. Okay, his novels Memory of Elephants, Asylum, USA, A Woman Madly in Love, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. पारसी कम्युनिटी, बमन देसाई अच्छी तरह से बता रहे हैं. सो बमन देसाई का पारसी कम्युनिटी, is definitely getting presented. A lot of you who have done, I remember 3 of my students, they're doing research on Parsi population, Parsi representation, and like, how there's been an organic growth in Parsi literature, or Parsi characters will always be there. तो ये भी आपका होता है. Shashi Tharoor has written the great Indian novel, right? And besides, he writes every now and then. You are able to see the writings of Shashi Tharoor. Even when we are talking about, किस तरह से he's also trying to talk about contemporary events as well as political events. Acha, who has written the Trotternama? Who has written the Trotternama? Who is the writer who's written the Trotternama? Trotternama किसने लिखा है? Who is the writer who has written the Trotternama? Trotternama किसने लिखा है? Can anyone quickly tell me who's written Trotternama? Trotternama किसने लिखा है? Who's the writer who's written Trotternama? Trotternama is a work written by Alan Seeley. ठीक है, Alan Seeley. Nobody was able to answer this. तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि हमें अपने बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा. We'll have to build a little on our basics. So please, Arvind Krishna Mehrotra, I will see if I have it. I will share it. No, Girish Kennard is not the right answer. Girish Kennard is not the right answer. It is Alan Seeley writing Trotternama. Trotternama, right? जैसे बाबरनामा, बाबरनामा बाबर की स्टोरी आपको बता रहा है. So first novel Trotternama, story of 7 generations of the Anglo-Indian family, the Trotters. राइट, तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रॉटर्स के बारे में है. इवन एवरेस्ट होटल लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज एज वेल. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर एलन सीले इज ऑल्सो योर राइटर, जो आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल के अंदर इंपॉर्टेंट है. रोहिंटन मिस्त्री, सच अ लॉन्ग जर्नी. रोहिंटन मिस्त्री तो वैसे भी आपके एग्जाम्स के लिए ही इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. रोहिंटन मिस्त्री इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. That when we are looking at Rohinton Misri, he was born in Bombay, immigrated to Canada altogether. He writes about middle class Parsis. जैसे आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कर रहे थे. Remember, E.A. Robinson is the first person to get Pulitzer in poetry, but Robert Frost also is getting it like 4 times altogether, but writing about simple themes. Similarly, he's talking about simple Parsi households that are trying to come up with complex problems of survival, overall basic survival. Such a long journey, set in Bombay in 1971, right? आपका जो war चल रहा था altogether. So ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कैसे क्या क्या दिखाया जा रहा है overall. Fine Balance by Rohinton Mistry. Rohinton Mistry is important. Okay, Fine Balance, right? All of these works, Such a Long Journey. इनको थोड़ा सा डिटेल में भी करना है. एंड ऑफ कोर्स ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था अभी हाल ही में. अमिताभ घोष के जो वर्क्स है, पुट देम इन ऑर्डर. शैडो लाइंस वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, राइट. हंग्री टाइड, ग्लास पैलेस, कैलकटा क्रोमोसोम, इबिस ट्रिलॉजी ही इज राइटिंग, राइट. ही इज एसोसिएटेड विद इबिस ट्रिलॉजी. ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड वेरी humble that he is. He said that he was very happy to see that the university in which he had studied, the university, Delhi University, St. Stephen's College, where he had gone, he said that I was really proud to be taught as a course. So Shadow Lines is a Delhi University book also, जो कि बच्चे पढ़ते हैं. So again, that is what you are able to see. That is the essence of Amitav Ghosh overall. Upmanyu Chatterjee, you will be surprised इनके जो questions आते हैं English August में. There have been 5 times in your NET exam itself that you have got questions on Upmanyu Chatterjee. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, this is something that you will have to keep in mind, that how all of these writers, they're constantly being asked all together as well. So please keep that in mind. Please remember that altogether, because a lot of times we actually go wrong with these very basic questions जो कि हमारे ठीक होने चाहिए technically, right. ठीक होने चाहिए overall. So please ensure कीजिएगा that you are able to cover it overall, right. So English August, story of Agastya, right. Agastya, known as August to his westernized friends altogether. How the Indian civil services, ये भी पूछा जाता है, right. Yes, absolutely right. Absolutely right. All right.
सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. Rani, I want you to read Arvind Krishna Mehrotra and highlight all of these pointers also and make short crisp notes. That's what I was telling classroom students also. Please ensure कीजिएगा that you are also working on your own handwritten notes at least for these topics once, right? Even when we talk about Vikram Seth, suitable boy, born in Calcutta, right? How this novel is set. आप वैसे suitable boy का you can actually see. You can also see the series. It's predominantly very similar. Golden Gate भी Vikram Seth का है. तो आप एक बार suitable boy, if you get the time over the weekend and if you want to just go over it, how you're able to see Rupa Mehra, the widow. She's just wanting to ensure that she finds a suitable Hindu boy for her daughter Lata, because Lata is of a marriageable age altogether, but Lata is in love with Kabir, right? Lata is in love with Kabir. That is what you're able to see. So overall, that is what is coming. Amit Chaudhary is a professor at Ashoka University, and he's also written on the poetry of D.H. Lawrence. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने poetry of D.H. Lawrence पे भी लिखा है. इन्होंने poetry of D.H. Lawrence पे भी लिखा है. So please remember that also. Was born in Calcutta, and Afternoon Rag, a new world, again very important. How we all have got a sort of commodity fetishism ki wajah se we feel a little happy and relaxed, but the world is having much more to that. It's not just retail therapy that you can apply. Kaise a couple, when the sun is coming back, but the couple is retired, how they have they have only enjoyed life over the weekends. That is what you're able to see largely, right? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी. यहाँ पर वी विल बी पॉजिंग. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज इस पार्ट से आई विल बी स्टार्टिंग टुमारो. वील ऑल्सो बी डूइंग क्वेश्चंस, बट माय ओनली आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज आई वांट यू ऑल टू गो ओवर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा. ठीक है, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए. इफ यू वांट टू डू एम के नायक, आई एम फाइन विद दैट ऑल्सो, बट एनी बेसिक बुक ऑन इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज इवॉल्विंग. पर्टिकुलरली आज आपका फोकस क्या है? आज आपका फोकस है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नॉवल. आई वांट यू टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नॉवल. कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाले टाइम में, लाइक आई सेड के ट्यूसडे फाउंडेशन बैच में, तो वी आर स्टार्टिंग ऑन विद पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स व्हिच इज एक्चुअली नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज का आपका होमवर्क इज वेरी सिंपल. आई वांट यू ऑल to just go over the development of Indian English writings. Arvind Krishna Mehrotra से अगर आप करेंगे तो that will be very good altogether. I want you all to go over it properly, and in case that there are any other doubts that you're having, anything which is concerning you, please let me know on neerja.raheja.faculty@testbook.com. अगर कोई और problem हो तो please let me know, and please revise everything. Alan Seeley, G.V. Desani, जो हम लोगों ने करा है, इनको सबको अच्छी तरह से आप रिवाइज करके आइएगा. फाइन. Thanks Fatima. Thanks everyone. Take good care of yourselves, and I'll catch up with all of you tomorrow. कल मैं आपको पक्का से मास्टर क्लास का भी पूरा schedule I'll give it to you for next week. Okay. Thanks Komal. Thanks Ravi. Take good care of yourselves. All right. Okay. Yes. Do like the class. Fatima, thank you so much. All right. Right. Thanks everyone. Take good care of yourselves, and in case if there are any other concerns or problems, do keep me posted. So memory of elephants किसने लिखा है? Obama Desai. So all of these things also you should be able to recollect. Okay. Chalo. Thanks. Bye. Take care. Thank you. Good night, Kumari. Good night, Neha. Good night, Ravi. Good night, Future Dreams. Good night, everyone. Thank you. Don't forget your manifestation at 11:11 also. Okay. Bye. Take care.